ओके, नाउ डेट फंक्शन. नाउ मैं यहाँ पे टुडे लिख देता है, टुडेज डेट. So what is your date of birth? Can anybody tell me? 6/3/2000. Sorry. 1/6/1999, sir. 1/6/1999. So what we are going to do is now we are going to see the difference between the two dates. That means if you want to find the age or something, then we can search for it. ठीक है? तो चलो उसके लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे ना, that is date diff. Now date diff function is a different function. Why? क्योंकि अब तक आप लोग देखते थे ना कि जैसे मैं यहाँ पे सम लिखता था तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में सब आ जाता था. करेक्ट? दिख रहा है आपको? नंबर 1 डालो, नंबर 2 डालो, ये ऑटोमेटिकली आ जाता था, है ना? बट डेट diff is a hidden function. So when you will type, इसका कुछ भी नहीं आने वाला. So you have to be very careful. So in this case, what you need to do is सबसे पहले old date select करो, comma, new date select करो, and then if you want to find the number of years, so in double quotes, write Y. Okay? यहाँ तक clear है फंडा? Yes, sir. Then आप क्या करो? Enter press करो and see now 21 years. Okay? Yes, sir. Now similarly, if you want to see some other in months, so आप क्या करोगे? देखो, use the same function date diff, bracket open, close, and then if you want to see the months, so M. So you are 258 months old. समझ में आया? Total, it is showing the total 258 months. Clear? Okay. Now similarly, if you want to see the date, so date diff, comma, and then D. So you are 7,881 days old. Okay. Yes, sir. Okay, but I don't need the age in this way. What I need, I just want like 21 years, 2 months, and 5 days old. अगर हमें ऐसे चाहिए, so what do we need to do? For the year, we will use the same thing. Date diff, bracket open करो, and then use Y. अब months को difference में सिर्फ देखने के लिए, if you want to see only the difference between the months, तो आप क्या करोगे? Use the same, but rather than M, you use YM. ठीक है? And then see. So you are 21 years, 6 months, and how many days? So date diff, ऐसे कर लेते, then ऐसे कर लेते, and then MD. समझ में आया? 27 days. Is it clear? Yes, sir. Now, what if I want to? यहाँ पे मैं name लिखता है. This is Manisha, right? Yes, sir. Manisha. So अगर मैं इसको concatenate करेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? बताओ. How to concatenate these? फंक्शन यूज करके सर. Okay, so concat use कर सकते हैं. Concat. और हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, like Manisha is, remember this function? Manisha is text join यूज कर ले क्या? टेक्स्ट join नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. मतलब इससे यूज करते, then years, comma, this again and operator. सर इससे यूज करते months, फिर से and operator, then इतना yes. समझ में आया? ये कैसे हुआ? Is it clear? हेलो? Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं. Can I have a different name? कोई और बताएगा अपना डेट ऑफ बर्थ? या सर. Yes, tell me. 18/6/1999. 18/6/1999. So जैसे मैं एंटर प्रेस करेगा सी. सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते हैं गजराजा एंड वंशिका. या सर. एंटर जैसे करे देखो ऑटोमेटिकली वी हैव द रिजल्ट, राइट? सो गजराजा वंशिका इज 21 years, 6 months and 10 days old. Clear? Yes, sir. ओके, चलो इसको जरा सा डमी डेटा पे भी चेक कर लेते हैं हाउ टू यूज दिस.
Now imagine a situation, your boss gives you a data where you have this 800 students data where you have the what? Date of birth सबका यहाँ पे रखा हुआ है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं. I just want to see the age, so यहाँ पे age करते हैं. कैसे करेंगे? Date, diff, clear? Date of birth, comma, आज का डेट से करना है तो टुडे डेट यूज कर लेंगे. यूज द टुडेस डेट, comma, what I want, year. समझ में आया ये कैसे हुआ? अब इसको जैसे एंटर प्रेस करते हैं, ये देखो डेट दे रहा है, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन हैव द एज. तो ये हो गया हमारा एज. नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट डबल क्लिक या ड्रैग कर लेंगे. नाउ सी, एक बार में सारे स्टूडेंट्स का एज निकल गया ना? Yes, sir. So this is a function by which you can find the age. ठीक है? Yes, sir. अगर आपको किसी का गारंटी वारंटी भी निकालना हो किसी प्रोडक्ट का, देन यू कैन सर्च फॉर द मंथ्स आल्सो, राइट? कि उसका वारंटी है या नहीं है. करेक्ट? समझ में आया ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?